Okay, so we are starting this chapter number 6, automated system, and this is 6.1. So first of all, we need to discuss that what is an automated system. So an automated system is a combination of software and hardware. You need to understand that I have two important terms here, that is software and a hardware. That might include all of the hardware components, and along with those hardware components, you have softwares as well. For example, I can certainly say I have sensors, microprocessors, and actuators that is designed and programmed to without the need of human intervention. Like, why do we invented machines, or why do we invented robots or artificial intelligence? That means that we should have the ability to work without machines, right? So this is what the word says, automated system, that you can work without human intervention, or they are designed and they are programmed to perform those specific tasks which you can complete them without any human intervention. Means you can design them, you can program them to complete that specific task, and they can complete them. One important thing is that they do not need Uh, they are based on two important terms like hardware and software. As I discussed, that it is going to include sensors, microprocessor, and actuator, and we are going to discuss each one of that in detail. So first of all, what are sensors? Sensors we have already discussed in chapter number 3 as well. So they are the input devices that take readings from their surroundings and sends the data to the microprocessor. For example, you can have different types of sensors. You can have temperature sensor, you can have proximity sensor, and their basic task is that they are going to take the readings and they are going to send it to the computer. But if they are taking reading from the world, that means that these are that means that it is going to take the readings from analog, right? Because all of the world values that are measurable, they are to be known as analog value. That means that if the data is analog, that is first going to be converted into the digital form that we have discussed in chapter number 1, in the chapter of sound, that for the computer to be able to process data, it must have to be converted into digital form, right? So sensors are going to first take all your analog data, then it is going to send it to the computer for processing, and before sending it, it's going to convert it into digital form so that it is understandable by the computer. Then, just as the data is received, the microprocessor is going to process it and take necessary actions based on that. This involves some form of the output involving signals that are sent to and control motors, to control wheels, to convert solenoids, and so on. This basically means that first of all, I have sensors. The responsibility of the sensors is to sense your environment. And if you have those certain conditions and you have to perform that action, it sends the information to the microprocessor, and based on those readings, microprocessor decides that either if the work has to be performed or not. Like for example, I can say that actuators are used to control motors, wheels, or solenoids. Actuator is basically a machine component that helps you in the movement of them. So this is basic concept of an automated system, and there can be certainly different number of examples that we are going to discuss in this chapter. Like I can have an automated system in in transport, in agriculture, in weather, in even gaming, in lighting, and in science. Now I'm going to discuss each of the application one by one. First of all, in industrial application, I can give you an example of a nuclear power station. A nuclear power station, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहले राइट इन द सेंटर यू कैन सी दैट इट सेज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. इस कंट्रोल सिस्टम के साथ आपके पास काफी सारे सेंसर लगे हुए हैं. आपके पास टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, फ्लो का लेवल सेंसर है, गैस सेंसर है, आपके पास रेडिएशन लेवल सेंसर है, एंड ये सारे सेंसर्स आपके पास रीडिंग लेके किसको दे रहे हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को सारी रीडिंग्स पहुंचा रहे हैं.
और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जो है आपके पास किससे कनेक्टेड है? ये आपके पास कनेक्टेड है आपके एक्चुएटर से। आपके पास एक्चुएटर्स क्या होते हैं जो आपका जो भी मशीन का टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है ऑटोमेटिक शट डाउन, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्चुएटर की। अच्छा, सेकंड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी एक्चुएटर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक्चुएटर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैस पंप को कंट्रोल करने के लिए या इसके वेल्व्स को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड आपके पास क्या है भाई? यहाँ पे मेरे पास एक्चुएटर हैं, लेकिन एक्चुएटर क्या कंट्रोल कर रहे हैं? वाटर पंप को और वेल्व्स को। दैट मीन्स कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम किस पे चल रहा है? रीडिंग्स फ्रॉम दी सेंसर्स। तो अगर मेरे पास सर्टेन लेवल की सेंसर रीडिंग्स मेरे सिस्टम को बताएंगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एक्चुएटर से कहेगा कि आप इनके वाटर पंप्स, इनके वेल्व्स, इनके गैस पंप्स, या सिस्टम को शट डाउन कर दो। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल? एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, which is using an automated system. It means that it is controlling and monitoring a nuclear power station. At the center, you can see that I have this distributed control system, and this is a powerful mechanism. That means that there is no human intervention needed. The same is written here as well. Here again, we are going to follow the same concept that I have just spoken to you. That means that data from a number of sensors is first sent to your DCS. अगर वो डेटा आपके पास एनालॉग में है तो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म using ADC. The DCS will have access to a larger database containing the data and the parameter. अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत है तो सिग्नल्स को देखते हुए हमारे एक्चुएटर्स उन पंप्स को, उन वेल्व्स को या किसी इमरजेंसी शटडाउन को कंट्रोल करेंगे. The key here is that the system is fully automated. You do not need a supervisor or human controller to monitor all of the process. One by one, through all of these applications, I'm also going to discuss the advantages and disadvantages of this. तो पेपर के अंदर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल आती है या आपके पास इन जनरल पूछा जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में, सो यू बी एबल टू राइट दम. ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज बेटा आपके पास क्या है कि इट इज मच फास्टर देन अ ह्यूमन ऑपरेटर टू टेक दोज नेसेसरी स्टेप्स. मतलब अगर आपके पास कोई भी ह्यूमन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड थिंक, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, के अगर इस कंडीशन को परफॉर्म करना है या नहीं, या ही शुड कंसल्ट एनीवन, या व्हाट कैन बी द प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि उसके पास सारी कंडीशन नहीं होती. लेकिन अगर मैंने एक सिस्टम ऐसा बनाया जो सारे सेंसर्स हमारे कंप्यूटर को बता रहा है, तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट ऑन अ मच फास्टर रेट देन ह्यूमंस. अगेन ह्यूमन का रिएक्शन टाइम, ह्यूमन के एरर टाइम में कोई भी ऐसी एरर आ सकता है. Second thing is that it is much safer. Automated system is more likely to make timely interventions than human, and also it is also going to make the humans away from dangerous environment. जैसे न्यूक्लियर अगर फैसिलिटी में आपको जाना है तो it is hazardous to human. You cannot always send the humans there. तो उसके लिए you can send robots. You can make a mechanism. You can make machines to work there. You can create sensors there to take the recordings. That is safer for humans. थर्ड आपके पास क्या है कि द प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू रन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन सिंस एनी स्मॉल चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड वेरी क्विक एक्शंस कैन बी टेकन. एंड सेकेंडली दैट इन अ लॉन्ग रन इट इज लेस एक्सपेंसिव. एन ऑटोमेटिक सिस्टम रिप्लेसेस मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स. अगर आप कोई इतने सारे आप एम्प्लॉयज रखते हो, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपका एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियसली वो सैलरी भी रिक्वायर करेगा, और ऑब्वियसली नो वन कैन वर्क 24 hours, 48 hours a day. But if you're talking about machines, that means that one time you need to manage them. But if you have managed them well, that means that they are providing you reading, so that and they are already taking the decisions on themselves. That means that आपकी labor force कम हो रही है, आपकी salaries कम जा रही है, monthly इतनी cost नहीं है, one time cost है. However, there can be certain disadvantages as well. Disadvantage is that obviously it is expensive to set up in the first place, and it needs considerable amount of testing to see that if it works or not. Right? For example, sensors have to be calibrated before they starts taking reading, बिकॉज सेंसर्स की वैल्यू के ऊपर हमारा कंप्यूटर डिसीजन लेगा. अगर उस सेंसर्स की वैल्यू ठीक नहीं हुई तो हमारे पास कोई भी एक गलत डिसीजन हो सकता है, जिससे बड़े जो है वो डिजास्टर्स हो सकते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें टेस्टिंग की ज़रूरत होती है. सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ सेट ऑफ कंडीशंस टू अकर.
that would never occur during testing phase. Third thing is that any computerized system is subjected to cyber attacks. Yes, definitely you are moving to technology. And if you are moving to technology, that means that you are always vulnerable to these types of viruses, cyber attacks that can weaken your system. Third thing is that automated system, they needs enhanced maintenance, which can be expensive as well. That means that you are required to update them again and again. So they can be quite expensive as well. Similarly, within the same industry, I have another example of this manufacture of paracetamol. But see, there's one thing in common. You have a central computer system. It is connected to a database. Database का काम ये होता है उसमें जितना भी data store होगा वो सारा यहाँ पे record होता रहेगा. Second thing is that you have this monitoring station. अच्छा monitoring station के साथ आपके पास आपका interface है. Interface के अंदर this जो green button है this actually stands for sensors and this blue stands for actuators. तो अगेन सारी इंफॉर्मेशन डीसीएस के पास जा रही है और सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, और अगर वो वैल्यू आपकी ट्रू है तो इट इज गोइंग टू टेक द डिसीजन और नॉट. So again, let's complete this as well. So automated system depends on the sensors. Yes, it depends on a computer, actuator and a software. अगर आपके पास प्रोसेस वन मैन्युफैक्चर चल रहा है पैरासीटामोल का, प्रोसेस टू इज द मेकिंग ऑफ सॉलिड टेबलेट्स, बोथ processes can be monitored by a number of sensors. Yes, उनका डेटा वापस जाता है आपके सेंट्रल कंप्यूटर पे. कंप्यूटर जो है फिर कंसल्ट करता है डेटाबेस को कि यार करेक्ट पैरामीटर्स हैं या नहीं. अगर वो करेक्ट पैरामीटर्स हैं तो नेसेसरी सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं जो वो उन्हीं पंप्स को चलाते हैं. सो दिस सिस्टम इज अगेन फुली ऑटोमेटेड. अगेन यू योरसेल्फ थिंक कि अगर इतने सारी जगहों पे हम अपनी वर्क फोर्स लगा दें, लेबर फोर्स लगा दें और इतना ज़्यादा हैजर्डियस एनवायरनमेंट हो तो इट्स अगेन अ लॉस ऑफ योर कॉस्ट एंड अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल. तो कितने हजार्डियस एनवायरनमेंट में जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो इट इज ऑब्वियसली. अब पाकिस्तान के अंदर तो हम अपनी कोल माइंस के अंदर भेज देते हैं अपने गरीब मजदूरों को, लेकिन इट्स ऑलवेज नॉट ऑलवेज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर ह्यूमन डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड. दे डोंट ऑलवेज सेंड देम, दे रिस्पेक्ट ह्यूमन फोर्स. तो इस वजह से जो है वी मेक यूज ऑफ दिस ऑटोमेटेड सिस्टम. अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में अगेन इट्स सेम. तो आई वाज जस्ट एज आई वाज सेइंग लास्ट में कि अगर आपको तीन से चार चीजें पता है ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में तो यू कैन राइट इट. इट्स अगेन मच फास्टर, इट्स अगेन मच सेफर. एज मैंने बताया ह्यूमन इंटरवेंशन कम है. इट कैन रन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन सिंस एनी स्मॉल चेंजेस रिक्वायर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड. वर्कफोर्स आपके पास बेटा कम है. इट हैज more efficient use of materials, it has a higher productivity, it has more consistent result. However, disadvantages can be that it is more expensive to set up. It always possible for a set of conditions to occur. तो उसके लिए टेस्टिंग चाहिए. टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप कोई भी काम करते हो, आप एल्गोरिथम बनाते हो. हमने एल्गोरिथम में प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास टेस्टिंग इंक्लूडेड थी. यस, यू नीड मेंटेनेंस एज वेल. एंड अगेन, whenever you are going towards technology and you are going towards networking, you always have a risk of cyber attacks. So up till now, किसी का कोई क्वेश्चन है?